Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 8, issue of debentures. And today we will start the new topic, which is similar to the shares, that is consideration other than cash. तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे हम पहले शेयर्स को असेट्स के बदले में इशू करते थे, अब की बार हम डिवेंचर्स को असेट्स खरीदेंगे और हम उसके अगेंस्ट हम डिवेंचर्स इशू करेंगे। तो तीन तरीके से हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने किया है, बोर्ड पे देखिए। X company purchased assets of the book value of rupees 10,45,000 from Y company. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 14% debentures of rupees 100 each. Assumed debentures have been issued at par, second at a premium of 10%, and third at a discount of 5%. Give necessary journal entries in the books of X company. Discount on issue is to be written off in the first year itself. So first of all, we will make the entry of purchasing the sundry assets account debit to Y company. Y company is the name of vendor. Now first point it says that we have to issue debentures at par. So simply journal entry will be Y company debit to 14% debentures account 10,45,000, whatever is the purchase consideration. Second point is we have to issue debentures at premium of 10%. So all of you know the journal entry will be Y company debit to 14% debentures account to security premium reserve account. Now we will calculate the number of debentures. Number of debentures will be purchase consideration upon face value plus premium. So it will be 9,500. So we will multiply the 9,500 with face value, then we will get the amount of debentures. And when we will multiply the number of debentures with premium, then we will get the security premium reserve 95,000. So this is the journal entry for issue of debentures at premium to the vendor. And the last point is we have to issue debentures at a discount of 5%. So whenever we issue debentures at a discount to vendor, then entry will be vendor account debit, discount on issue of debenture account debit to 14% debentures. Now the formula is different for the discount. We will divide the purchase consideration by face value minus discount, because discount is to be subtracted from the face value. So answer will be 11,000. It means we have issued 11,000 debentures to the vendor. So how will we calculate the discount? We know that discount is 5 rupees per share. So discount will be 11,000 multiplied 5, 55,000, and the face value of debenture will be 11,000 multiplied 100, 11 lakh. And we will subtract 55,000 from 11 lakh, and we will get the actual issue price 10,45,000. So this is the journal entry for issue of debentures at discount to vendor. And also we have to write off the discount. For writing off the discount, we mean to say that we have to transfer the discount to the statement of P&L. What is the statement of P&L? This is the format of the profit and loss account of the company. In the company's profit and loss account is prepared in the form of a statement of P&L. Hence we call it as statement of P&L account debit to डिस्काउंट ऑन इशू। तो डिस्काउंट ऑन इशू को हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे 55,000 being discount on issue written off. Next, all questions are similar to the previous chapter. In some questions we are purchasing business, and when we purchase business, if there is balance on the debit side, it is called as goodwill. If there is balance on the credit side, it is called as capital reserve. So one more question we are going to do. Okay, we will do question number 12. A company purchased assets of the book value of rupees 12 lakh and liabilities of 2,20,000 from another company for a purchase consideration of rupees 9,40,000.
The purchase consideration was discharged by the issue of debentures of rupees 500 at a discount of 6%. Past journal entries in the books of purchasing company. Company writes off all capital losses in the first year itself. The discount on issue of debenture is a capital loss. So, first of all, we will purchase the assets, and there is a liability also. So, entry will be sundry assets account debit, to sundry liabilities, to vendor. Assets are rupees 12 lakh and liabilities are 2,20,000, and purchase consideration is 9,40,000. There will be balance on credit side, and we know when there is a balance on credit side, it means that it is our capital reserve. It is a gain for the company. This gain is of a capital nature, and it will be transferred to capital reserve account. 40,000. Now we will make payment to the vendor. Vendor is to be paid at a discount of 6%. So entry will be vendor account debit, discount on issue of debenture account debit, to percentage is not given, so we will write to debenture account. Now we will calculate the number of debentures to be issued to the vendor. First of all, the vendor will be debited with rupees 9,40,000, because here we will write purchase consideration, and number of debenture निकालने का formula है purchase consideration divided by face value minus discount. Discount is 6%. 500 का 6% होता है 30. तो 9,40,000 को हमें 470 से डिवाइड करना पड़ेगा. It will be 2,000 debentures. Now we will complete the entry. So we will multiply the discount with number of debentures. So 60,000 will be the discount, and 500, 10 lakh will be credited to debenture. So this question is complete, and at last we have to write off the discount. For writing of discount, we have capital reserve also. So we can write off the discount with capital reserve also. Capital reserve account debit 40,000. Statement of P&L account debit, because discount is more than capital reserve. So we have to debit the statement of P&L also, and we will credit the discount on issue 60,000. This is the entry for writing of the discount. Now we will do question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 में हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तीन तरीके से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं. दिशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज. By issuing 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%, by issuing 209% debentures of 100 each at a discount of 10%, balance
बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹50,000 पेबल आफ्टर 1 month। तो हमने दिशा लिमिटेड से मशीन परचेज करी और फिर हमने उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कराए। हमने उसको 10,000 के इक्विटी शेयर दिए हैं 10% प्रीमियम पर। तो हमें इसमें पता नहीं है कि हमने मशीन कितने रुपए में खरीदी है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि परचेज कंसिडरेशन कितना है। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए हमें पता है कि हमने उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10,000 मल्टीप्लाई 11 इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 10% का प्रीमियम है। उसके अलावा हमने उसको दिया है 9% डिवेंचर और 9% डिवेंचर हमने दिया है डिस्काउंट पे। इट विल बी 200 मल्टीप्लाई 9 रुपीज 90, क्योंकि 100 रुपीज का शेयर है और हमने 10% डिस्काउंट में इशू किया है। और थर्ड पॉइंट है बिल्स पेबल। हमने उनको बिल्स पेबल दिया 50,000 का। सो 1,78,000 हमारा आ गया परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब हमने उनसे जो असेट खरीदी है वो 1,78,000 रुपीज में खरीदी है। अब आप देखिए एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू निशा लिमिटेड, $1,78,000। देन हम उसको पेमेंट देंगे। पेमेंट देना है, सबसे पहले इक्विटी शेयर देना है उसको। तो एंट्री होगी निशा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR, क्योंकि हमने उसको 10,000 शेयर दिए 10% प्रीमियम पर। तो ये आएगा 1,10,000। फिर हमने उसको 200 डिवेंचर दिए हैं और वो दिए हैं 10% डिस्काउंट पे। तो एंट्री होगी निशा लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। अब इसमें अमाउंट कैसा आएगा? हमें अमाउंट क्वेश्चन में खुद ने दे रखा है कि 200 डिवेंचर है और 10 रुपीज का डिस्काउंट है। तो 2,000 तो आएगा डिस्काउंट में और 200 मल्टीप्लाई 100 20,000 आएगा डिवेंचर में और बैलेंसिंग फिगर में 18,000 आ जाएगा निशा लिमिटेड के अंदर। इसके बाद हमने बैलेंस अमाउंट के लिए निशा लिमिटेड को दिया बिल्स पेएबल। तो उसकी एंट्री होगी निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और इसमें अमाउंट आएगा 50,000। So this is the journal entry for the machinery purchased and payment being made to Nisha Limited. You have to do homework up to question number 19. ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 तक अपनी कॉपी में वर्क कंप्लीट
करना है। हैव ए गुड डे।